friend, I am Dr. Vibhash and welcome to my channel. Today in this video we'll learn about the muscles of the extensor compartment of forearm. So first we'll identify the muscles of the extensor compartment of forearm. फिर बाद में हम उसके ओरिजिन, इंसर्जन, नर्व सप्लाई और एक्शन के बारे में हम टेबुलर फॉर्म में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आते हैं मसल्स ऑफ extensor compartment of forearm. So you can appreciate here, this is the posterior compartment of the forearm muscles और posterior compartment of forearm के muscles को हम extensor compartment बोलते हैं. Okay, so extensor compartment of forearm की muscles further इसको हम better study purpose के लिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, superficial group and deep group. ओके, सुपरफिशियल ग्रुप में हमारे पास 7 मसल्स प्रेजेंट है, एज वेल एज अगर हम डीप ग्रुप में देखें तो वहाँ पे हमें 5 मसल्स मिलेंगे. ओके, देन जब भी हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म की मसल्स को, सो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है क्यूबिटल फोसा. सो गाइज हमेशा याद रखना, क्यूबिटल फोसा विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द आइडेंटिफाई द मसल्स ऑफ द फोरआर्म, क्योंकि द लेटरल वॉल, फ्रॉम द लेटरल वॉल ऑफ द क्यूबिटल फोसा से हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स को काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं और ये आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं. सेम अगर हम देखें मीडियल वॉल से हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं. सो गाइस आपको याद होगा कि क्यूबिटल फोसा का जो लेटरल वॉल है वो बनाता है ब्रेकियोरेडियलिस मसल. सो यू कैन आइडेंटिफाई हेयर, दिस इज द ब्रेकियोरेडियलिस मसल. ये वाला मसल है हमारा ब्रेकियोरेडियलिस मसल और नीचे हमारा क्यूबिटल फोसा लाई कर रहा है, जो कि इस वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज द ब्रेकियोरेडियलिस मसल. देन फर्दर और इजी स्टडी पर्पस के लिए हम सुपरफिशियल ग्रुप के मसल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेटरल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट. सो लेटरल पार्ट इज कंटेन्स 3 मसल्स फ्रॉम लेटरल टू मीडियल. फर्स्ट यू कैन अप्रिशिएट दिस इज द ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स. ओके, यहाँ पे आप देखो ब्रेकियोरेडियलिस मसल. उसके बाद हमें देखो दूसरी मसल उसके जस्ट बाद मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल. सो दिस इज द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल. और उसी के जस्ट मीडियली हमें क्या मिलेगा, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल्स. So this 3R forms the lateral group of the superficial muscles. First the brachioradialis muscles, उसके बाद extensor carpi radialis longus muscle, उसके बाद extensor carpi radialis brevis muscles. So this 3 forms the superficial group or lateral group of the superficial muscle. उसके बाद अगर हम देखें तो posterior group of superficial muscles में we have 4 muscles. सो फ्रॉम लेटरल टू मीडियल फर्स्ट यू कैन अप्रिशिएट हियर. सबसे पहला जो मसल आपको मिलेगा वो क्या है, देखो यहाँ पे गुच्छे के फॉर्म में आपको मिल रहा है, ठीक है. और आगे इसको अगर हम हैंड की तरफ टेस्ट करें तो ये जो टेंडन्स है फर्दर ये स्प्लिट्स हो रहे हैं, देखो, और जाके फेलिंग्स के बेस में जाके ये अटैच हो रहे हैं, ठीक है. तो ये गुच्छे की फॉर्म में जो आपको टेंडन दिख रहा है, दिस इज द एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल्स, ठीक है. दिस इज द एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल. फ्रेंड हमेशा याद रखना, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म की मसल का कॉमन ओरिजिन है, वो है आपका लेटरल एपिकॉन्डाइल. फर्दर हम इसका डिटेल ओरिजिन इंसर्जन टेबुलर फॉर्म में वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे. फिलहाल अभी हम लोग मसल्स को कैडेवरिक हैंड में आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है. सो यू कैन अप्रिशिएट दिस इज द एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल. उसके बाद दिस इज द एक्सटेंसर digiti minimi muscle. So here this is the digiti minimi. Then digiti minimi के बाद toward the ulna you can appreciate another muscles and this muscles is called the extensor carpi ulnaris muscles. Okay, so posterior compartment में हमें 4 muscles मिल गए, extensor digitorum muscles, extensor digiti minimi muscles और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस मसल्स, और ऊपर आपको यहाँ पे एनकोनियस मसल्स के फाइबर और दिख जाएंगे. दिस इज द एनकोनियस मसल्स. सो दिस इज द एनकोनियस मसल. ओके, सो सुपरफिशियल में 5 मसल्स फिर से एक बार हम लर्न कर लेते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सबसे पहले
ब्रेकियोरेडियालिस मसल्स, उसके बाद दिस मसल्स इज नोन एज द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, उसके बाद एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, उसके बाद ये गुच्छे के फॉर्म में एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल्स, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी मसल्स और extensor carpi ulnaris muscles. So these sevens form the superficial compartment of the posterior compartment of the forearm muscles. उसके बाद हम अगर इस मसल्स के बेली को कट करके करेंगे तो हमें डीप ग्रुप मिल जाएगा. ठीक है, तो अभी इस स्पेसिमेन में पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ बेली को कट करके डीप ग्रुप के मसल दिखा दूँ, बट जितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी मैं उस सारे मसल्स दिखा दूंगा. तो गाइज हम वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बोला था कि डीप ग्रुप में हमारे पास 5 मसल्स प्रेजेंट है. ठीक है, ऊपर के पार्ट में अगर हम इन सारे मसल्स को हटा दें तो थोड़ा बहुत हमें देखो यहाँ पे फाइबर दिख जाते हैं सुपिनेटर मसल्स के. सो हेयर वी कैन अप्रिशिएट दिस इज द सुपिनेटर मसल्स. देन अगर हम नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे देखो बहुत सारे मसल्स ऐसे ओब्लिकली क्रॉस करके सारे के सारे आपके थंब की ओर आ रहे हैं. ठीक है, सो ओब्लिकली क्रॉस करके थंब की ओर आ रहा है. तो यहाँ पे आपके कौन कौन से टेंडन्स है? यहाँ पे टेंडन्स है अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का और एक्सटेंसर इंडाइसिस का. ठीक है, सो डीप ग्रुप में कौन कौन से मसल्स हो गए? सुपिनेटर, देन अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एक्सटेंसर इंडाइसिस. एक्सटेंसर इंडाइसिस के जो फाइबर है यहाँ पे थोड़े बहुत फाइबर आपको दिख जाएंगे. यू कैन अप्रिशिएट हियर दिस इज अ फाइबर ऑफ द एक्सटेंसर इंडाइसिस मसल्स. ओके, सो डीप ग्रुप में हमारे पास 5 मसल्स हो गए: सुपिनेटर मसल्स, अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड ब्रेविस और एक्सटेंसर इंडाइसिस मसल्स. सो गाइज अभी हमने कैडेवरिक हैंड में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म के मसल्स को आइडेंटिफाई किया. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सारे मसल्स के ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन को टेबुलर फॉर्म में. सो लेट्स डिस्कस द डिटेल अबाउट द ओरिजिन, इंसर्शन ऑफ द ऑल द मसल्स. Now first we'll discuss about the attachment, nerve supply and action of superficial muscle of back of forearm. So first muscle is anconeus. The anconeus is taking origin from the lateral epicondyle of humerus and it get insert over the lateral surface of olecranon process of ulna. The anconeus muscle is supplied by the radial nerve and the action of the anconeus muscle is extend the elbow joint. Second superficial muscle is the brachioradialis muscle. So brachioradialis muscles taking origin from upper 2/3 part of lateral supracondylar ridge of humerus and it get insert over the base of the styloid process of radius. It is also supplied by the radial nerve and action of the brachioradialis is flexes the forearm at elbow joint, rotate forearm to the mid-prone position from supine or prone position. The extensor carpi radialis longus muscle, it is taking origin from the lower 1/3 of the lateral supracondylar ridge of the humerus and it is get insert over the posterior surface of the base of the second metacarpal bone. It is supplied by the same nerve, the radial nerve, and action of this extensor carpi radialis longus muscle is the extend and the adducts hand at wrist joint. Then the fourth muscle is extensor carpi radialis brevis muscle. It is also taking origin from the lateral epicondyle of humerus and it get insert over the posterior surface of base of third metacarpal. It is supplied by the deep branch of the radial nerve and action of the extensor carpi radialis brevis is extend and adduct hand at wrist joint. Fifth muscle is extensor digitorum muscles. So extensor digitorum muscles taking origin from the lateral epicondyle of the humerus. It get insert over the bases of middle phalanges of the second to fifth digit
It is supplied by the deep branch of the radial nerve, and action of the extensor digitorum is extend fingers of hand. Then sixth muscle is extensor digiti minimi. Same origin, that is lateral epicondyle of the humerus. It get insert over the extensor expansion of the little finger, supplied by same nerve, deep branch of the radial nerve, and action of the extensor digiti minimi is extend the metacarpophalangeal joint of little finger. Then last or seventh muscle of superficial group, that is extensor carpi ulnaris muscle. It is taking origin from same structure, that is lateral epicondyle of the humerus, and get insert over the base of the fifth metacarpal bone. It is supplied by the deep branch of the radial nerve, and action of the extensor carpi ulnaris muscle is extend and adduct hand at wrist joint. So these are the superficial muscles of the back of the forearm. Now we'll discuss about the deep muscle or attachment nerve supply and action of the deep muscles of back of forearm. So first muscle is supinator muscle. Supinator muscle taking origin from the lateral epicondyle of the humerus, annular ligament of the superior radioulnar joint, and the supinator crust of the ulna and depression anterior to it. It is get insert over the neck and whole shaft of the upper one third of the radius. The supinator muscles is supplied by the deep branch of the radial nerve, and action of the supinator muscles is supination of the forearm when elbow is extended. Then the adductor pollicis longus. Adductor pollicis longus taking origin from the posterior surface of the shaft of the radius and ulna, and it get insert over the base of the first metacarpal bone. It is supplied by the deep branch of the radial nerve, and action, that is adduct and extend the thumb. Then third muscles of deep group, that is extensor pollicis brevis. Extensor pollicis brevis taking origin from the posterior surface of the shaft of the radius and get insert over the base of the proximal phalanx of thumb. It is supplied by the same nerve, that is deep branch of the radial nerve, and action of this extensor pollicis brevis is extend metacarpophalangeal joint of the thumb. Then extensor pollicis longus, it taking origin from the posterior surface of the shaft of the ulna and get insert over the base of the digital phalanx of the thumb. It is supplied by the same nerve, that is deep branch of the radial nerve, and action of the extensor pollicis longus is the extend digital phalanx of the thumb. Then fifth muscles of the deep group, that is extensor indicis. It is taking origin from the posterior surface of the shaft of the ulna, and it get insert over the extensor expansion of the index finger. It is supplied by the same nerve, that is deep branch of the radial nerve, and action of this muscle is extend metacarpophalangeal joint of the index finger. So these are the origin, insertion, nerve supply and action of the superficial as well as the deep group of the back of the forearm. I hope all of you understood the topic. Friend, if you understood the topic and learn how to identify the muscles of the back of the forearm, then please do not forget to like and comment the video and subscribe our channel. And you may also share this session with your friend. Thank you for watching.